Guys, am I audible? So, okay. And just wait, I have to delete something. Before starting sharing, so that like it does not get lagged this time around. Okay, let's then start. Okay. Harsh, can you run yesterday's code? I'm sharing my screen. Wait a second. वो like that code अपने ट्राई किया था सबने, रन तो हो रहा है शायद से, क्योंकि हो रहे मैसेज आए थे मेरे को कि लाइक रन तो हो रहा है वो। किसी का रन नहीं हो रहा तो बताओ यार, फिर देखते हैं, नहीं तो फिर मैं। मेरा थोड़ा एरर गायब हो जा रहा बाल। क्या हो रहा है? बोल गायब हो जा रहा है। हाँ, वो एक लाइन का ले रहा है फिर गायब हो जा रहा है, वो स्क्रीन के बाहर निकल जा रहा है। विवेक का रन हो रहा है, मतलब रन तो वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब कैसे बाहर जा रहा है, एक बार रन करके दिखाओगे शेयर स्क्रीन करके। सर हमारा वो बिल्ड एंड रन हो रहा, बट सर वो गेम आउटपुट नहीं हो रहा सर, स्क्रीन पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मैं सर बहुत बार ट्राई किया हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्ड भी हो रहा है, रन भी हो रहा है, बट सर आउटपुट में गेम नहीं आ रहा है उसका। सर आउटपुट नहीं आ रहा सर, ये सर मेरे साथ भी हो रहा है। अच्छा, तो वो डाउट में देख लेंगे, एक बार डाउट सेशन ज्वाइन कर लेना। पर लाइक वो कोड तो ठीक है, क्योंकि हेलो, हाँ कोड ठीक है वो। कोड में कोई इशू नहीं सर, कोड हाँ से बिल्ड भी हो रहा है और रन भी हो रहा है सक्सेसफुली सर, बट सर वो आउटपुट नहीं आ रहा सर। हाँ, वो इश्यू हो सकता है, कुछ देख लेंगे, उसको हम कवर कर लेंगे। बस ये होना चाहिए कोड रन हो रहा है, क्योंकि फिर रन तो हो जाएगा, वो करा लेंगे, कर लेंगे। एक बार डाउट सेशन ज्वाइन कर लेना, उसमें देख लेंगे। नहीं तो इस क्लास के बाद ही जल्दी बन जाएगा ये वाला प्रोजेक्ट, उसके बाद देख लेंगे। ओके। हो सकता है थोड़ी क्लास नेमिंग में हो दिक्कत, हो सकता है कुछ छोटा मोटा। बट सर डाउट सेशन हर कोई जो भी बोल करते उस टाइम आप बोल रहे हो। हाँ नहीं फिर सकते थे। नहीं, यहाँ पे पहले इसको कर लेंगे ना पूरा, ये छोटा प्रोजेक्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बच जाएगा आधा घंटा लास्ट में, उसमें कर लेंगे। आज ही कवर कर लेंगे, चिंता मत करो, वो जो भी दिक्कत आ रही है उसको कर लेंगे। और कोई पूछ रहा था कि मतलब रनिंग प्रोजेक्ट्स कैसे रेज्यूमे में दिखाए जाते हैं, तो देखो यहाँ पे आके गूगल पे कल जो बात हुई थी, github.io पे अपलोड करना होता है। github.io पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, अपना प्रोजेक्ट अपलोड करोगे ना जब तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड जब भी उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो प्रोजेक्ट सीधा ओपन हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट बना के उसके आगे लिंक लगा देना यहाँ पे अपलोड करके, ठीक है। रन करके तो रनिंग प्रोजेक्ट स्टेट में आ जाएगा, github.io है वेबसाइट, ठीक है। तो कल किसी ने पूछा था, तो इसलिए स्क्रीन विजिबल है ना, तो स्टार्ट करें अपना नया बनाना प्रोजेक्ट। इसको इसको इसकी जो दिक्कत आ रही है उसको कर लेंगे कवर, उसकी उसकी दिक्कत नहीं है, उसको कर लेंगे।
हेलो, आवाज स्क्रीन शेयर दिख रही है? यस नो बता दो कि आगे चल बढ़े। कर लेंगे गाइस, दिक्कत मत लो, कर लेंगे, कवर कर लेंगे उसको भी। वो कोड सारा ठीक है, एक बार रनिंग का चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो देख लेंगे। ओके, तो ओपन बोर्ड ओपन कर लेते हैं पहले तो। Yeah, there is specific doubt session for project building also. But we will cover everything after this project, so don't worry. In these 2 hours we will do the project, and like in the next 2 hours we will get a hour or so for ourselves. So in that we will see on GitHub also, like how to upload on GitHub sub commands. Okay. Okay. Open board is open. Okay. Guys, can you see my screen now? Open board screen. So let me do. So basically what we will do now, this is a screen of a calculator. So first we will make a screen, and there will be like how much buttons, like you can have as many buttons as you want, like clear, delete, like there will be 2 more buttons, clear, delete. It can clear the whole thing out, like only one step back, and this can be space, this can be decimal, this can be cancel, and there can be numbers ranging from and 0, and this will be our screen. And like I have to make first, like let us discuss what we're trying to make. So this is a calculator using Java Swing. Okay, so basic thing about the calculator we know. It does mathematical calculations. Okay, guys, so like we've discussed the previous project. Okay, how does Java Swing works? It makes a screen first, that is J frame. In that we can have J panels. So in this we will need panels, because for the output screen this is a different screen. I don't want to change it, everything with frame now, because this is only for output. I have to somehow make buttons on the screen. Okay, I have to make the buttons on the screen. The number of buttons I have to decide. You can increase or decrease as per your likings. And after I have inserted all the buttons, I have to write logic for every button. What does it do? For example, if I type in 9, screen 9, screen should have 9. If I do like addition between 2 numbers, this should produce addition. So I have to write the logic for all the operations. Okay, so this is the basic thing we should try to achieve. Okay, like you can make it fancy. You can make like 10-12 more buttons, and like you can make like you can make the changes as per you like, but like this is the basic thing we will cover. And like I recommend that you make some changes yourself.
Okay, उसमें कुछ you should add something by your perspective also, because that's important whenever you're learning something. So इसमें like we will move slowly, understanding everything. As it's a minor project, it will be like the brick breaker game only. Okay, so it is does not take like too much of code, like it's good for our understanding. Okay, let me know if like we are clear with whatever we are going to do today. हेलो हेलो, हेलो। हाँ हाँ, यस प्रशील। हाँ सर, एक बार थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए। मेरा एक्चुअली लाइट अभी आई है तो मैं अभी ज्वाइन हुआ। ओके 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 ओके। तो प्रशील, अपनी ज्यादा कुछ बात नहीं हुई थी। we in this class we are going to make a calculator. Okay, just like we made the game, the brick game. In this we want a screen for output, a big screen for representing everything. We should add some buttons to it, and like some delete operations like addition, subtraction, these kind of buttons. So I was talking about like we have to have a frame now, panels. We have to make the buttons on the screen. The number of buttons I can decide like by myself how much buttons I want. It can be of any number I like. Like after that I have to write the logic for every button. Like if I press 9, the panel should have a 9 on the screen. So for every button I have like some logic. For every operator I have to write a different logic. So because if an operator is there, the calculation should be done. Okay, after an equal to button has a different logic, clear button has a logic, delete button has a logic, decimal button has a different logic. So I have to write all the logics. First I have to make them appear, then I have to write the logic for all of them. Okay, this is what we will try to do. What's the motto? Data structure will be used in this also. So motto is nothing but like to make you familiar with the Java Swing as we move on to the major project. Okay, so these 2-3 are made with the help of me, but like you can make more yourself. I will give resources to you. You can make more projects on this. There are ping pong games, many things that you can achieve. Okay, bird game, Flappy Bird. हाँ, ये संदीप बेसिक नहीं कह सकते इनको, यू कैन माइनर प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। कि माइनर प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई टेक्नोलॉजी सीखी है, आप उससे नए नए फैमिलियरिटी लाए हो, तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए दिखाने के लिए कि मेरे को टेक्नोलॉजी पे वर्क करना आता है। एंड मेजर प्रोजेक्ट ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपको उस प्रोजेक्ट पे बड़े स्केल पे काम करना आता है एंड आप बहुत सारा डाटा हैंडल कर सकते हो उस टेक्नोलॉजी पे। तो पहले उनको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपने माइनर भी बनाया, दो पहले सीखा, फिर बनाया, फिर हमने मेजर किया। हेलो सर। हेलो मोहित। हाँ सर, जैसे इस बैच में 17 स्टूडेंट्स हैं, सभी सेम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कोई यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर आप हमारा तो मोटो ये है ना कि हम आपको 2 प्रोजेक्ट सिखा रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे ना कि आप 2 से 6 और बनाओ अब। एंड लाइक आपने रेज्यूमे में फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाओ। नहीं, खुद से नहीं, आपने जावा सीख ली, स्विंग सीख लिया, थोड़ा थोड़ा आपने प्रोजेक्ट्स देख लिया कैसे बन रहे हैं, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो ना, आप बटन से ऐड कर सकते हो, थोड़ी फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना। एंड उसके अलावा भी अगर आप फिर बाहर जाके गूगल भी करोगे, लाइक तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मिल जाएंगे जावा स्विंग पे। तो फेमिलियरिटी लाना है इज द मेन मोटो। उसके बाद तो फिर अपना हार्डवर्क तो है ही, आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हो, नया जावा में बना सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो ये था अपना मेन मोटो। तो अब चलते हैं फिर, नेटबीन्स खोलते हैं, फाइल।
File, new project. Okay, but guys, make a new project in your section also. Okay, Java application. Next. So make this calculator. Okay. So the calculator.java is formed. किसी को इस पॉइंट में दिक्कत है कि मतलब कैसे नए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करते हैं, लाइक क्लासेस बनाते हैं, तो लाइक दे कैन लेट मी नो, लाइक इज एवरीवन फॉलोइंग अप एट दिस पॉइंट? Okay. I should explain everything in English. Okay, that's fine. Okay, I will keep that on mind. Okay. Guys, can we start building the calculator if everything is fine until this point? Okay. ठीक है, चलो. Let's start building up then. If everything seems fine. So first thing first, as we have done in the previous project, we need a JFrame. Okay. And this I need a text field that will represent all the things that are added to it, like in the calculator screen. So I need a text field also. Okay. So I have to import something. It's showing me error. Let's see what I have to import. Okay. Now, okay. Now everything is fine. It's showing error because these two things are not used. That I have initialized JFrame into a frame variable and JText field into text field, and I have not used it. That's why it's showing me error as of now. So let's use it. J button. Okay, for buttons, all the buttons. So how many buttons we want? If I calculate the only buttons, like first thing, let me draw. Okay. So I have differentiated buttons into two categories here. Okay. First are number buttons, basic buttons, like number buttons 0 to 9. So this is 10 buttons. Okay. And they are functional buttons. So like I can like the logic easily, because number buttons does nothing but like it's represent itself. But functional buttons provides a functionality. Okay. Function button like multiply, divide, addition, subtraction, clear, delete. So these are total 9 buttons that I've taken. Okay.
So this is the thing I want to clear up before going forward. So just I'm initializing all the things that are required by me at first. That's the first step of every project. And then I'm specifying the button names. So add button, subtract button. Let's take a multiply button. Okay. Then a division button. Decimal button. Equal button. Delete button. Clear button. Okay. Negative button. Okay. I'm calling the panel. I have to import the button library. I have to import the panel one also. So now I have named all my buttons, 9 buttons that are functional buttons. Number buttons I don't have to name because they are numbers itself. And I have written a panel here, okay? Because frame has different panels as I've discussed to have different functionality, okay? Okay, and it also until this point. Okay. So let's move forward. हर जे पैनल और फ्रेम में डिफरेंस क्या है? Frame पूरी screen होता, frame is the whole screen, okay? And panels are different parts of the screen, okay? So if I do something with the object on the panel, it will change the thing on the panel only. But if I do make an object of frame and like make changes to it, it will be represented to the whole screen. Okay, so now let's see how can the numbers be represented, the font and everything. So you can take the font as you like. Now the first number can be double as well as second number. Double means like the decimal digits. Like we have a decimal button, so I have to take every number as double because
there can be a case where the number is in the decimal form. Okay, because I have provided a decimal functionality, so I have to make sure I cover the base case. Okay, so there is a character of operator. So now everything is initialized. So let's just start painting the stuff. Okay, let us call the calculator constructor. Frame, I'm giving the title to a frame, that is calculator, that is representing on the screen whenever Java application opens. Now I'm setting all the things to the frame, so it is of uniformity. It will be implemented to the whole screen. सर ये कैलकुलेटर क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेटर ये टाइटल है, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। देखो फंक्शन को कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ना, कि क्लास है, सॉरी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना, जैसे कि आपने ट्री किया होगा तो नोड क्लास बनाई होगी, तो नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया होगा। तो जो हमारा क्लास नेम होगा यहाँ पर वही लिखा जाएगा? हाँ हाँ, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। डिफॉल्ट सर ये जे बटन और डेटा टाइप है? जे बटन एक फंक्शनैलिटी है इसमें, क्या कहते हैं, जावा फ्रेम लाइब्रेरी में बटन्स बनाने के लिए। अच्छा, उनका साइज तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा लेकिन बटन बनाने के लिए, पर ये फंक्शनैलिटी होती है। ओके। ये क्रॉस करने के लिए कि वी वांट द एप्लीकेशन टू क्लोज व्हेन आई क्लिक ऑन क्रॉस। और फ्रेम का साइज सेट करें, जैसे उसमें किया था कि हमें कितने साइज का फ्रेम चाहिए। इसमें मैंने लिया है 4, मतलब कुछ भी ले सकते हो। स्पेक्स क्या होते हैं, 768 से लेके 1000 कुछ तक होते हैं, उसके अंदर तुम कितना भी ले सकते हो। अगर पूरा लोगे तो पूरी बड़ी स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब हमें चाहिए कि स्क्रीन के बीच में इतना सा वो अपना विंडो आ जाए, उसमें देख सके। ओके, तो फ्रेम डॉट सेट लेआउट, so now we have set it all the things we want to set on the frame. Okay, now see if we are setting things for the text field. Okay, now I'm setting the text field that will be representing on the screen. Like, let me draw it out. I have done, I'm setting the frame for the 420 550. Now I have to make a text field here to represent everything I'm doing.
So I am taking the width as 300 and height as 50. So the dimensions are like that for that. Okay. सर सेट बाउंस का मतलब क्या होता है? सेट बाउंड्स का मतलब होता है कि बाउंड्स मतलब उसका क्या होता है कि चार, जैसे कि मान लो कोई चीज, सॉरी, बाउंड्स इज लाइक दैट आई एम डिक्लेयरिंग ऑल द फोर, where is my screen placed. So bound is something like that, where should I draw this thing. I have to give it four things so that I know where my place is at. So width is 300, height is 50. As per the screen, if I see the screen is of width 420, so something like this, and this is 550. मेन स्क्रीन में कहाँ पर हमें हाँ, सेट करना है फील्ड को? या सर XY जो लोकेशन है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मेजर हो रही है। हाँ, so this is how we set the panel thing to represent everything we are doing. Now text field dot set size. सर बाउंड्स में हमने साइज डिक्लेयर की, तो फिर से उसको क्यों डिक्लेयर किया? नहीं, वो गलती से कर दिया। वही के देख रहा था, मैंने गलती से कर दिया वो, इसलिए उसको चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट करना था, मैंने गलती से बाउंड कर दिया। So like you can see what a clever thing I did here was I declare my font in the my font variable here at above in the class calculator itself. So I don't have to write fonts whenever I have to like differently, so that I can use my font everywhere and this whole thing will be implemented. Okay. So you can make a default font and default color if you want for something, and like you can use it wherever you find useful. So text field is done. So now we should add buttons. Okay. Now I have a screen and I have a panel to represent my all the operations. So now let's just add the buttons. So whenever I press add, a positive number will be presented to screen. Subtract button. We have not set it this button to screen. We're just making sure
We know what every button will represent on the screen first. Only the functional ones. क्या हुआ वहाँ पे? Wait a second, what happened here? I would made okay, there are 3 T's here. Okay, that's one. Equal button equal to new J button. Clear button, and last is negative button. Okay. I have not. Okay. So now I have declared everything like what every button represents on the screen, and like what I should name them when I put them on the screen. So these are the things that will be represented on the screen. There will be a plus for addition button, and like this type of buttons will be formed. These are the functional buttons only. Apart from them, there are like 9 more buttons. So anyone has any doubts until this point? सर लोकेशन ऑफ ईच बटन अभी सेट नहीं करे ना? नहीं अभी लोकेशन सेट नहीं किया, अभी हमने बस ये we have not set the location, we have only compromised that like what every buttons represent on the screen. सर नेगेटिव बटन अलग से क्यों डिक्लेयर किया है? मतलब सब्सट्रैक्ट वाला जो बटन है उसको तो पहले नेगेटिव बटन अलग से डिक्लेयर करना पड़ा। सब्ट्रैक्शन बटन का जो हम लॉजिक लिखेंगे ना, वो ये लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन 2 बटन्स के बिटवीन में आ रहा है तो ऑपरेशन कुछ परफॉर्म होगा। मतलब नेगेटिव बटन का काम क्या है? होल थिंग को ही नेगेटिव कर देना है। ओके If anyone has more doubts, let me know. Button size we have not done right now. We will cover that in the later half. So Aishwarya, we have not like fitted these things on the screen. We are just declaring them how they should look on screen. We have not done anything to represent it on screen right now. Number buttons we will also do. After that we will do the number buttons. Okay.
Now I'm categorizing them in an array. Okay, now we are using an array, guys, as you can see. So I'm putting that and them into an array because like for when I write the logic for them, I can use the array to iterate fastly so that like I do not have to write for specifically for every button because moreover the logic behind them is like something somewhat different but like not entirely different. So I can use an array to store all of them and like I can do the common points that have the logic that are logical common in all of them at the same time. Okay, guys. So Control C. Hey, we will use the loop. That's why I'm putting everything into the array. Okay. After that, we will use the loop. But first, I have to put them into a array and ashes. Okay. So second, I am adding subtract button. Then I'm adding multiply button. Then I'm adding division button. Equals button. Clear button. And negative button. Okay. So now I have set everything, so I can literally use the for loop and iterate over them. Okay. So let me do the for loop now and add all the things that are common to all of them.
So I'm adding a action listener here. Okay. But I have not imported that, so I have to do that like first, but like I'm doing this. Okay, whenever a button get pressed, I should know what button is getting pressed. Okay. So now just I have to add the additional listener here. So okay. All the abstract method are added. So guys, what I've done here is whenever I have to add some functionality to all of them. So I have done what I've done. I have like, let me comment it out here. To an array that I can iterate over them, implementing all the common functionalities with these. Okay. Now here what I have done is I have implemented action listener. So whenever I press a button between these 8, 9 buttons, I would know what button it is. So like I have to know what button is pressed. So if anyone presses a subtract button, I should know subtract is pressed. So I have to write a logic for subtract only, not addition. This way action listener is implemented to all of them. Then the font I have kept the same as I've kept for all of them. Then set focusable to false. So focusable means key. If I set focusable to true, so it will focus when I click on button, it will focus more on the screen, will not be shaking. So this is something we have to do always. Okay, while making the applications. Does anyone has anything to ask until this point? Can you explain set focusable one? Set focusable is like if I make it true. So when I click on a button, the screen will focus to that button only. So I don't want my screen to focus on something that is not too important to focus on. So I want it to maintain in relaxed position for all of things. Okay. Means it will be darken. Focusable means darken. Yeah. But I don't want the focus to go to any button. Okay. Okay. So is everything clear till this point? Guys, can let me know in the chat yes and no so that we can know. So let us do one thing. Why not key typed? Okay, because in the calculator, I will press the keys on the screen of the calculator. I will not type anything from my screen, from my keyboard. That's why I do not need the key typed in this. I need only action listener. Okay, so how are we taking inputs?
It's in calculator. These are the different buttons here. So I have to press it with the mouse now. So only key pressed is required. No, key press is not required. That's why, because I'm not inputting anything from my keys. Okay. So I think that is covered. We can do the you can make this changes. If you want to do for keyboard, you have to use the key event listener for the keyboard, and like there is only same thing. You can write the logic that is present in the key pressed, that is present in the action performed to the key pressed. The logic will be the same. Just have to write it on the key pressed. Okay. So 4-1 is there. So I'm taking like a 10 minutes break for eating my snack. So we will continue to 5 or 7 minutes. I will be back at 4:10 because this is not too lengthy project. So like we are taking 10 minutes break, and like we will cover everything in time. So I'm resuming in like 10 minutes. Okay. I'm here only, but like I'm resuming in like 5-7 minutes. Hello. 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 Huh? No, sir. You carry on. I'm talking. Look. Anyway.
Hello. Am I audible? Okay. So whoever left, let them know in the group, like we are back and we're starting to play. Okay, let can you see my screen? Okay. Can you guys see my screen? Like participants. Okay. So now everyone is back. Like we should start. Okay. Okay. Now I'm doing the things for the number buttons. Okay. So all have everything in common. So number buttons has a different numbers, but like all the things are common. That like if I press something, it should represent on screen. It does not have a like a different logic behind them. Okay. So whatever the value of string that is there, it should be the button itself. Okay. That's why for loop come in handy. I don't have to type for everything. Okay. Add action listener to it. Number buttons. Set the font as the default font. Set focusable as false. So let's see what these 4 lines of code. So we had number buttons like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. There are 10 buttons that are classified as number buttons. Okay. So it will run the loop from 0 to 9. That is basically 10 digits. Okay. So number buttons, I this then what this, so it whenever I press a button, it takes the value of that I. So like I is 0. So in the first case, 0 is the value.
So the button value is also 0. So button represented as 0, then 1. So it will cover all the base cases. So that's why the for loop was essentials here. So in the first iteration, I will get a 0 number, 0, 1 button, then 2 button, then a third 3 button, then a 4 button, then a 5 button, then a 6 button. So I will get all the button till the 9th button. Okay. Okay. This is what about the buttons. And this event listener actions listens to the buttons, like 0 is pressed, so 0 is listened. Now send focus tool is false in set font for the 0, that is like it bold 30 size. So something that we have written as a default case. And does everyone agree with me till this point? Okay. Now we should set these buttons. Okay. Now we should work on setting these buttons on the screen. We have done every base case, covered everything. Now we should work on setting these things onto the screen. Negative button. Set bounds. So for the last 3 buttons that are replaced below the, so what I am doing is, okay, so I'm making like these 3 buttons like 0, 1, 2, 3 are in a row, and like there is a button here. So these 4 has a different panel, these 4 are different panel, these 4 are different panel. So I am covering the lowest panel first. Okay. So I am setting the position of all the buttons that are different from the panel. Okay. All the like number buttons are in the panel, but like all the functional buttons that are on the right side, I have to set it myself. Okay. And delete button. Okay. So I've setted them, and then now I'm making the panels for all the different things. I will explain everything. Wait a second. Yeah, I will explain the thing I am doing now. Make negative button size 50. Okay. Thank you for that. Now I'm making the whole panel different from them. Okay.
Okay. So let me explain what I have done. That's the important thing now. Okay. So these three buttons I am setting differently. These buttons belong to this corner. Okay. I'm setting them here. Okay. So wait a second. These buttons are here. Okay. And I've set the width to 50. And the width is like first one is 50. So next one starts from like the distance from here to here, like this is 50. So this starts from 150 and this starts from 250. So the width of all the buttons is 100. So as we can see that there is a difference of 100 between them. So they are stacked together at the bottom half of the calculator. Now for everything different in these three buttons, what I'm doing, everything that are different from these three buttons, I'm making a panel that is of size 300 to 300. Okay. And like I'm making a grid layout. Everyone knows the grid layout, grids. So I'm making 4x4 grids, like 4 buttons this way and 4 buttons this way. 1 2 3 4, 1 2 3 4. So this is what I'm making. Like let me know if everyone can make the sense now. Let me know if you are good with the layout, and like why did we make a grid, and like are you clear with everything we I've done in the past 5 minutes? Okay. Now let's start adding things in the panel. Sir, I have a doubt. Yeah. वो जो नेगेटिव बटन का जो साइज है x इज इक्वल टू 50, हाँ. वो मतलब हम लोग जैसे देखते हैं कि बाउंड जो है वो ऊपर से काउंट करता है टॉप साइड से, तो इसमें जो 50 है वो किधर से लेगा, नीचे से आएगा ना कि ऊपर हाँ, से आएगा? ये बॉटम लाइक एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना तीनों बटन, x50, x150 एंड x250, तो ये बॉटम पे लाई कर रहे हैं, बॉटम में स्क्रीन लाई कर रहे हैं, एंड विड्थ सबकी 100 है, लाइक दैट्स व्हाई x में 100 ही सेपरेशन है, तो मतलब इसका मतलब ये है दे आर स्टैक्ड टुगेदर विद द हाइट 50. ओके. Now I'm adding the buttons. I have to add the buttons to a panel now. Copy paste. Yeah, I can copy paste, but like this will not take much time, and like the project is not too big, that's why I am typing it out. Now in the first 4 grid, like I mentioned, the 4 grids should be like 4 elements in every grid. So first grid has 4 numbers and an add button. Okay. What is it saying? Wait a second. Panel dot add button. So इसमें क्या error दिखा रहा है? Now it's good. So ऐसे ऐसे मेरे को जो भी the number I require in which whatever order I like, I have to add it this way. Okay. So in the first I added like 1 2 3,
and like after 3 I have to add an add button. So like let's like I think I should not add number 4 because a grid is of size 4 by 4. So after 3 I want the addition operator. Okay, so you can design the grid yourself. So 3 numbers, and after that an operator. Panel dot add subtract button. Okay, 3 के बाद panel dot add multiply button. Panel dot add multiply हो गया. Like count, let me count the numbers I've added. 3 get 4, then 5, then 6, then subtract button, then 7, 8, 9, and 9 के बाद I have only 0 left. So after multiply, I should start adding my functions. Decimal button. Let me remove that. Panel dot add number button. Only 0 is left. So let's add 0. So I think 2 operators are left. Subtraction, addition, multiplication, decimal, equal and division is left. And I have to add this panel to the frame. Okay. And frame, I have added the panel first. Now I should add the different, like the 3 I have done differently. Button.
Okay, these things are not used, so that's why it's showing. Well, this constructor will be called in the main function. Okay, let's call it so that I can show you it does not have any error. So I have to use the calc now, but like I think upper one will be gone. Okay, as you can see. So let's discuss what I have done here. Okay, that's the important part. So I have discussed this and like we have setted this. Let me go. This is frame. We have established that we have 3 buttons here and we have a layout of 4x4. Okay, this is what we have established. So now I am adding 4 things at a simple site. So number button 1 array, array first position, तो 1 है यहाँ पे 1 2 3 and I am adding add. Then I'm going down 4 5 6, then I'm adding subtraction button, and then I am going 7 8 9 and I'm adding multiply button. And now the operators are finished. So that I have designed is like decimal button here, 0 here, equal button here, and divide button here. So this was negative, delete, and clear button. Okay, and this is my text field. So there are 3 different panels now: text field panel, this whole grid panel, that I have added this panel with the name of panel, and this is a different entity. So I am added all of these things to the main frame, as you can see here. Guys, if you have any doubt, let me know at this point. No. Run Mohit, it will not run because I have to complete the main function now, and like I have unused these things so that like it cannot run right now. But like we will run it in the next class, no worries. I will run the project okay in front of you, and like we will see the previous project, what's the difficulty we are facing. Okay. Hello, yeah. Hello, sir. Yeah. सर इसको स्टार्टिंग से जी करना ऊपर से बिल्कुल लाइन नंबर 1 2 3 से स्टार्ट लाइन नंबर 1 2 3 से क्या करूं? स्टार्टिंग से कोड। हाँ सर, तो सर हमें लॉजिक बिल्डिंग तो बता दिया डीएसए के थ्रू, बट सर हाँ। ये इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स क्या क्या डेटा टाइप्स यूज होते हैं ऐसे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, बस आप कोड लिखते जा रहे हैं। देखो हमें बनाना क्या है तो मैं पता होना चाहिए। देखो आप पहले तो अगर आप लाइक इफ यू वांट टू बिल्ड एनीथिंग, first you have to know what you are going to build. So I am going to build a thing like that. I know. Okay, there are Yes, buttons. yes. So I will see for myself. I know in Java Swing there's a frame. So first and foremost thing, I have to set this frame as default values. I have to do the working on the frame. जस्ट बट सर अगर हम जैसे एक फ्रेम बना रहे हैं लाइक एचटीएमएल के जैसे एचटीएमएल बनाते हैं तो हैंड टू हैंड रन करा कर देखते हैं, जैसे अब हमने कुछ 2 फ्रेम्स बनाए बटन्स बनाए तो रन करा के देखेंगे कि ये सही तो बना है। we can run it hand to hand, but like I have done this project, so I know it is working fine. So I am skipping ahead, but like if I want to run at specific point, I can run it, and like you can run it. It's not a big deal. देखो after making these buttons and after implementing it in the screen, you can run it the project. It will run, but like you have to like it can run at any point. So it is not like that you can't run it. Okay, after making a single thing, you can run it. It will run. ओके और एक मेरा डाउट ये है कि इसमें मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि क्या वेरिएबल्स नेम है और क्या डेटा टाइप्स हैं,
समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ओके सभी देखने में ऐसे लग रहा है कि सब कुछ इनबिल्ड है। नहीं, वेरिएबल नेम तो देखो हमने ले रखे हैं ना, सो वेरिएबल नेम्स वी हैव डिक्लेयर्ड हियर ना। बट सर जो रेड कलर में है ये इनबिल्ड है क्या? आई थिंक नो। No, ये देखो, we have taken the variable names as add button, subtract button. These are the things we have declared. So in Java, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, हाँ इसमें हाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, रेड हाँ कलर में जो हुआ है कुछ भी। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। बट जो ब्लैक है ये आई थिंक इनबिल्ड है। हाँ, ये इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट चीज है। सो देखो, फॉर एग्जांपल इन जावा वी यूज इंट, फ्लोट, कैर। सो फॉर डिक्लेयरिंग मेकिंग buttons in the frame we use j button as in data type, as you can see. डेटा टाइप्स, यस। एंड Okay. ग्रीन में हमने कि स्टैक्स वगैरह दे दिया के। बट सर जैसे कि जे बटन है, जे पैनल है, इनका वर्क क्या क्या है, ये कैसे पता चलता है? देखो, j button, buttons to represents button on the screen. If you have requirement of the button in any project, you use j button. Okay. And if you have a screen and you want to divide it into different parts, as I can see, if I divide it into grid and like text field, I can proceed to my project in a further good way, and like everything is scattered. So what I can do, I can make the panels. Okay, panels are like smaller entities of the frame. And if I make changes to the panel, the changes will only sustain in that panel only. Okay. ओके, बटन्स के थ्रू हम मतलब कहीं भी हमें बटन की नीड है तो जे बटन का यूज करेंगे। हाँ हाँ। और पैनल्स मतलब एक हमें जो Panel is like div tag in HTML. Yeah, right. पैनल्स div in HTML. ओके, जे फ्रेम, जे फील्ड, वो जे फ्रेम। J text field is for like if you require a text field in any project, you will use text field. So these are things, if you keep on doing things, you will understand ki what is required where. So but like we have done two projects, so I think we are familiar with most of the things now. Can't learn all the things once. We have to use daily to get used to of it. Yeah, but like we have understanding now, na, but how things are working. So that's completely fine when we will be implementing it in like a more in a regular basis. So we will get everything. Okay, so but mostly I'm very confused. It seems confusing, but like if you see it after, like you will get it. Like whatever what is you don't get, you are not getting, like point it out, na, so that we can focus on that thing only. सर वो क्या कहना चाहता है कि अगर हम ये कोई भी प्रोजेक्ट खुद से लिखना चाहेंगे ना तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज कहाँ पर लिखनी है, कहाँ पर क्या डिक्लेयर करना है। आवाज नहीं आ रही आपकी। यस बस। हाँ सर, ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट खुद से बनाते हैं तो क्या चीज कहाँ डिक्लेयर करें, कैसे डिक्लेयर करें। वही तो एक देखो, एक इसमें देयर इज थिंग्स टू फॉलो फर्स्ट। ओके, कौन सी क्लास क्यों बनाई गई है। हाँ, देखो, ये पहले तो अपनी क्लास जो अपने नाम की बनी हुई है, पहले तो उसको बनाओ, उसके बाद सीधा जाओ फ्रेम्स बनाओ। पहले तो सबसे फर्स्ट थिंग टू डू इज मेक अ जे फ्रेम। ओके, आफ्टर दैट यू सी फॉर योरसेल्फ यू रिक्वायर पैनल्स और नॉट। इफ यू रिक्वायर पैनल्स, then make the panels first. Don't put anything on screen. Okay, first do not put anything on the screen. Declare everything. Okay, everything that you require in your screen, like buttons, in the previous game, like bricks, like the ball, the ledge. Declare that default first. Okay, then see if you want dynamic changes. If you want dynamic changes, you have to add key listeners. Okay, event listeners, so that do that, and after that add logic that if this happens, this should happen. So this is the thing you can follow. स्टेप बाय स्टेप। जैसे 21 से ये जो क्लास है कैलकुलेटर, ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, एक बार इसे डाउन करना नीचे तक। जी, ओके, आई थिंक हॉल मेन क्लास, इसके बाद मेन फंक्शन लगाया है बस। हाँ, मेन फंक्शन बनेगा इसका। इसी कैलकुलेटर क्लास में ही हमने सभी कुछ करा है। नहीं, कैलकुलेटर क्लास में हमने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेटर क्लास तो यहीं पे खत्म हो जा रही है।
नहीं मतलब कैलकुलेटर क्लास खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब कैलकुलेटर कंस्ट्रक्टर के अंदर ज्यादा काम होता है, क्लास के अंदर सिर्फ बेसिक डिक्लेरेशन होती है। जैसे मैंने कहा थर्ड पॉइंट, डिक्लेयर एवरीथिंग एंड फ्रेम जो बनता है वो क्लास के अंदर बनता है, और बाकी सारा लॉजिक एंड जो हमें पैनल्स में ऐड करने वाली चीजें वो हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं। और सर इनके लिए मुझे एक आप वेबसाइट सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सभी एट्रीब्यूट्स कहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे? आपको बस लाइब्रेरीज लिखनी है, कोई भी देखो मेन 3-4 लाइब्रेरी है, वो लिख दोगे तो अपने आप में एट्रीब्यूट सारे अपने आप आ जाएंगे वहाँ पे। मैं आपको फिर भी चलो सजेस्ट कर दूंगा, अगर नेक्स्ट क्लास में मैं रिसोर्सेज ले आऊंगा थोड़े से आपके लिए। ओके ओके ओके, एनीवन हैव हमें कोई अदर क्वेश्चंस देन हिम? अगर कोई कार बनानी है तो ये आपने मतलब कैलकुलेटर क्लास में ऐसे टायर, मिरर, फिर स्टीयरिंग्स ये सब डिक्लेयर किया है, और उसके बाद नीचे कंस्ट्रक्टर बना के उसका यूज किया है कि ये चीज यहाँ पे फिट करनी है, ये चीज यहाँ पे फिट करनी है। हाँ हाँ, ये है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होना जरूरी है प्रोजेक्ट में, तो इसलिए। सर एक कोड आपने कहाँ पे शेयर किया है? ये कोड मैं शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के बाद, अभी तो शेयर नहीं किया है, अभी इसको पूरा करेंगे साथ में, देन वी विल शेयर इट। ओके, आई विल शेयर इट। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। गिटहब में है ना सर? जो प्रोजेक्ट हाँ गिटहब में है। सॉरी विशाल, आई सेड आई थिंक आई म्यूटेड यू। ओके, सो हाँ कल वाले गिटहब लिंक में है, दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द गिटहब लिंक दैट आई शेयर्ड यस्टरडे, बट लाइक वी विल डू इट आवरसेल्व्स एंड लाइक वी कैन सी फॉर आवरसेल्व्स। So until this point, we have set everything to screen, declared everything. So in the next half, we will try to do what we'll do. We will try to like make all the functionalities occur. So that's what we will do in the next session, like that 8 to 10 thing. Okay. So if anyone has no more questions, like I will, when I come at 8, I will discuss this again, like whatever we've done till now in the whiteboard only. Let the view and logics are more clear, and like we will move on forward from that on. Like if anyone wants to ask anything, like they can ask, or like हेलो सर। hello, yeah. या सर कल आपने जो प्रोजेक्ट करवाया था ना, आज जैसे क्लियर हुआ है ना ये प्रोजेक्ट, कल थोड़ा सा कल का प्रोजेक्ट उतना क्लियर नहीं हुआ है, तो आज का प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो उसको एक बार आप 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेके रिवाइज करा दीजिएगा। हाँ कुछ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Okay. So on that note, see you at 8. Okay. सर Bye. जो आपने लाइब्रेरीज यूज की है, ये लाइब्रेरी सर इंडस्ट्री में यूज होती हैं अभी प्रेजेंट? हाँ बिल्कुल होती है ना। कौन सी फील्ड में, मतलब किधर होती हैं? अगर आप जावा डेवलपर जा रहे हो, लाइक देयर इज बैकएंड में जावा डेवलपमेंट होती है स्प्रिंग बूट से, तो उसमें यूज होती है। अच्छा। हाँ। और सर हमारा मेजर प्रोजेक्ट कौन से फ्रेमवर्क में होगा? फ्रेमवर्क क्या? स्विंग में ही होगा, वो बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसमें एसक्यूएल भी आएगी बैकएंड से, तो दिस इज दैट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। और सर वो सर्वर कौन सा यूज करेंगे? सर्वर नहीं, सर्वर यूज नहीं कर रहे ना उसमें हम, सर्वर डाटाबेस के लिए बस वो यूज कर रहे हैं, वो सॉरी माई एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं। अच्छा, माई एसक्यूएल वर्कबेंच एंड माई एसक्यूएल कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं, मतलब माई एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करेंगे उसको, अच्छा, पर लाइक लोकल मशीन में डाउनलोड करके उससे कनेक्ट करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है ना अभी कि हम उसको क्लाउड से कनेक्ट करें, वो नहीं करेंगे, बट लाइक लोकल मशीन में कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर से। सर जैसे फ्री सर्वर्स होते हैं ना, जैसे फायरबेस हो गया, उसमें थोड़ी अब फायरबेस तो बहुत इजी होता है ना, फिर उसमें तो कुछ करना थोड़ा ना होता है, फायरबेस से कनेक्ट तो बहुत इजी है, बल्कि माई एसक्यूएल में कनेक्ट करना तो उससे ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, फायरबेस तो इट इज वेरी इजी ना, जस्ट हैव हम टू जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको होस्ट करके लिंक डालना है रिज्यूम में। हाँ होस्ट करना जरूरी है। नहीं, होस्ट तो क्या है, इस पे लोकल मशीन पे तो जाता है होस्ट, मतलब फायरबेस तो क्या होता है, बैकएंड प्रोवाइड करता है, पर बैकएंड तो हम खुद बना रहे हैं ना। तो हम तो अपना बैकएंड खुद बना रहे हैं, हमारे पास डाटा है पूरा, सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो उसमें हमें फायरबेस की रिक्वायरमेंट क्या है?
सर फायरबेस में जो मतलब एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें बैकएंड मतलब हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सिर्फ फ्रंट एंड बनाना पड़ता हाँ है। वही मैं इनको समझा रहा हूँ कि फायरबेस में तो सिर्फ फ्रंट एंड बनाता है, बैक एंड देने की जरूरत नहीं होती, तो उसको होस्ट कर देता है बिना बैक एंड। अच्छा अगर आप रिएक्ट वगैरह पे काम करोगे तो फायरबेस में आप फायरबेस में बिना बैक एंड के उसको होस्ट कर सकते हो, तो रिएक्ट मौजूद होता है। नहीं सर, अगर हमारे अलावा कि कोई और इस प्रोजेक्ट को खोलना चाहे तो वो कैसे खोलेगा? इजीली खोल सकता है बिना कोड के? हाँ बिना कोड खुल जाता है ना, github.io पे अपलोड करो, वहां पे रन करके लिंक आ जाएगा एक, उस लिंक को अपने रेज्यूमे में डाल दो। ओके। सर थोड़े लोग सर हेरोको में वो करते हैं, होस्ट करते हैं, तो मतलब डिफरेंस क्या है गिटहब और हेरोको में? इसमें हिरोको और इसमें और सर मैं दोनों नेटलीफाई दोनों का सेम काम है, बट लाइक पोस्टमैन जैसे कि बैकएंड के लिए ज्यादा प्रेफर्ड होता है काम, तो पोस्टमैन का वही होता है ना जो इसका फायरबेस को होता है। पोस्टमैन क्या होता है, फ्रंट एंड की वो प्रोवाइड करता है एक तरह से, हमें जो डाटा मिलता है उसको दिखा देता है। पोस्ट फैच एपीआई जितनी बनती है, पोस्ट गेट फैच एपीआई, तो ऐसे ही फ्रंट एंड दोनों पॉपुलर है, फायरबेस भी पॉपुलर है, हिरोको भी पॉपुलर है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो चीजें तो बहुत सारी सेम ही होती है, कंपनीज डिफरेंट होती है, तो ज्यादा कुछ फंक्शनलिटी का डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा वही मार्केट में किसके ट्रेंड ज्यादा चलते सर एक बार सर जावा का बैकएंड का सर वो स्टैक बता दिए। हैं। जावा बैकएंड स्टैक में तो जावा है, एंड उसके अलावा ये होती है अपनी सॉरी स्प्रिंग बूट एंड स्विंग। सर इसमें डिफरेंस क्या है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में? लाइब्रेरी देखो वही बात है, देखो आपने जैसे कि एक्सप्रेस की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है, उसमें ऐसे स्विंग में भी लाइब्रेरीज हैं और उसमें स्प्रिंग बूट में भी लाइब्रेरीज हैं। अब इनमें ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, पर लाइक उसमें भी अलग अलग लाइब्रेरीज, जैसे कि इसमें है फॉन्ट की लाइब्रेरी, ग्रिड की लाइब्रेरी, एक्शन की लाइब्रेरी, उसमें भी अलग लाइब्रेरीज है। फंक्शनलिटी उसकी थोड़ी अलग है, इसकी थोड़ी अलग है, बस सेम चीजें है। अगर स्प्रिंग बूट सीखना है तो एक चैनल है यूट्यूब में, बता दूंगा। हाँ सर स्प्रिंग बूट में मतलब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। हाँ तो आप लिंक भेज दिए। हाँ एक चैट में। दुर्गेश करके कुछ है शायद से, मैं भी देख लेता हूँ, एक बार स्टॉप शेयर करके भी शेयर कर देता हूँ। कोड विद दुर्गेश आई थिंक। हाँ कोड विद दुर्गेश करके एक चैनल, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जावा स्प्रिंग बूट पे 7-8 साल से, उन्होंने डाल रखी है वीडियो, मतलब पूरी सीरीज है 120 वीडियो की, उन्होंने पूरा कवर कर रखा है स्प्रिंग बूट को, वो देख लेना। ओके सर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के भी लिंक शेयर करना ना हो रेफरेंस के लिए, मतलब क्या आइडिया है हाँ चलो, मेरा कुछ। हाँ ठीक है और प्रोजेक्ट्स के लिंक मैं 3-4 प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, फ्लैपी बर्ड ले आऊंगा, एंड पिंग पोंग गेम ले आता हूँ मैं, 3 प्रोजेक्ट्स में माइनर, अभी तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। या सर ओके अगले यूनिकनेस ऐसा बताया ना कि सबसे अलग हो, कुछ यूनिक, ये तो आई थिंक लिटरली नहीं फिर अलग ही होता है, जावा पे प्रोजेक्ट बच्चे करते कहाँ है, अब तुम एक्टिव में तुम कर रहे हो, बाहर कोई नहीं कर रहा ना, बहुत कम बच्चे करते मिलेंगे, तो इतना ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। मैं अब ने 5-6 प्रोजेक्ट्स ले आऊंगा नेक्स्ट सेशन में 8 बजे माइनर जावा से, उनको तुम्हें प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, यूट्यूब की कोड शेयर कर दूंगा गिटहब के, उसको देख लेना, ठीक है। तो सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में शायद से हूँ मैं, पर मेरे को मेरे में मैसेज शो नहीं हो रहे, तो मेरे को एक तो यार ऐड करवा दो यार ग्रुप में, मेरा नंबर एक बार ऐड करा देना मेरे को शायद से। एडमिन ही है तो शायद। एडमिन को मैसेज कर दो एक बार कि ऐड लाइक दिस इज आवर इंस्ट्रक्टर, उन्होंने मेरे को ऐड तो किया था, पर लाइक आई डोंट थिंक कि मेरे में है अभी एडेड। सर मैंने लिंक भेजी चैट वो ग्रुप की। चलो मैं भी ऐड हो जाता हूँ। सो 8 बजे मिलते हैं, मैं आपके लिए क्या लाना है, मेरे को प्रोजेक्ट्स लाने हैं, उनके लिंक्स लाने हैं, और थोड़े आइडियाज लाने हैं, स्प्रिंग बूट की प्लेलिस्ट लानी है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं 8 पे, ठीक है गाइस। ओके आई एम एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।